So guys, welcome to our video. So our topic is abstract class in Java and inner classes. So me, Ayush Mali and Jayesh Patil are going to explain you this topic. So let's move forward. So firstly, we are going to see introduction to OOP. Object oriented programming, OOP, is a programming paradigm that organizes software using objects and classes. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता ऐसा है कि हम ऑब्जेक्ट्स और मेथड क्रिएट करते हैं और उन्हें रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ ज्वाइन करते हैं. सो की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है पहले हम वो देखते हैं. Abstract classes are used to achieve abstraction in Java and define common behavior for subclasses. So let's see what is an abstract class. Definition: an abstract class is a class that cannot be instantiated and is used as a base class for other classes. So guys, abstract class basically होती ऐसी क्लास है जिसमें कम से कम एक abstract method होनी चाहिए. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि abstract method क्या होती है. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसके आगे ज्वाइन कर देते हैं और उसके अंदर हम कुछ डिफाइन नहीं करते. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता यह है कि कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हुई तो उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे. सो गाइस, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू व्हाई यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. सो फर्स्ट, इट प्रोवाइड कॉमन बेस फॉर सब क्लासेस, सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्शन, हेल्प्स अचीव कोड रीयूजेबिलिटी. सो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज क्यों करते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो हमें दूसरे चाइल्ड क्लासेस को सपोर्ट करती है. सो अगर हमने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है तो हम उसे चाइल्ड क्लास में आके डिफाइन कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसे हम एक्सेस कर सकते हैं. सो ये एक मेन यूज होता है कि हम अगर जितने चाइल्ड क्लास बनाएंगे उसमें हम हर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करके उन्हें एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनका यूज कर सकते हैं. So now basic example of abstract class. So ये एक abstract class animal है जिसमें हमने एक sound करके abstract method बनाई है जिसे हमने define नहीं किया है और हमने एक animal class का एक child class बनाया है जिसका नाम dog class है. So इस dog class में हमने जो abstract method sound थी उसे हमने define किया है जिसमें हमने system.out println dog barks, मतलब इसका आउटपुट आएगा dog barks, और हमने सिर्फ जो डॉग चाइल्ड क्लास है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पब्लिक क्लास में, जिसकी वजह से हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते. जो चाइल्ड क्लास बनती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की यूज से हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेन मेथड में उसको ही रन करते हैं. सो की फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक है. सो फर्स्ट, it can contain abstract and non-abstract methods. So जो abstract class होती है उसमें usually सिर्फ अगर एक abstract method जब भी हुई तो उसे हम एक abstract class कहेंगे और बाकी सारे method non-abstract रहे तो भी चलेगा, पर minimum एक abstract method उसमें चाहिए तो ही वो abstract class कहलाएगी. So moving to our second point, it cannot be instantiated. So जो abstract class होती है जिसमें हमने abstract method बनाया होता है उसका हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. तो हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम डिफाइन करते हैं उसका ऑब्जेक्ट हम मेन मेथड में बनाते हैं और जो सेकंड क्लास जो चाइल्ड क्लास बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना के हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे एक्सेस करते हैं. सो थर्ड पॉइंट है, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड वेरिएबल्स. सो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स एंड वेरिएबल्स भी बना सकते हैं. और लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज यूज्ड विद इनहेरिटेंस. सो हमने देखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बनाते हैं जो इनहेरिटेंस की वजह से पॉसिबल है. सो हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसे हम इनहेरिट करके जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करके उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. नाउ जयेश विल कम एंड एक्सप्लेन यू अबाउट इनर क्लासेस. So now we will learn about the inner classes. The first topic is member inner class. So member inner class is a class inside another class. The member inner class is declared inside the outer class but outside the outer methods. The key concept of the member inner class is that
the inner class can access all the variables even if they are privates. So we have created the class outer here, and in class outer we have created another class, that is inner class, and this is the syntax for the member inner class object. So static nested class. So static nested class is a class inside another class, and a static nested class is declared with the static keywords. So in this class we have created the class outer, and inside the class outer we have created another class, that is static class inner, and in the main method we have created object for the static class inner. In this class we do not need any object to create for the outer class. Next topic is local inner class. A local inner class is declared inside the method. We cannot use it outside the method. So let us come to the example. So in this example we have created a outer class, and in outer class we have created a method, that is void display, and in that method we have created another class, that is inner class, and here in the main method we have created object for the class outer. So now coming to the advantages of the inner class. The first is it improves encapsulation. So it keeps the code together, and it hides the details. The second is better code readability. It reduces the complexity in code and makes the code easier to understand in an easy language. So all the complexity in the codes are reduced, and it is very easier to understand. The third is logical grouping of the classes. The classes which are related to each other are placed in a main class, so it is very easier to understand the code. The fourth is used in GUI programmings and event handlings. So the advantage, the inner class is also used in various programming and event handling methods, such as button clicks and other methods. So now coming to the real life example. So we have taken an example that is more easier to understand, and it is very relatable to us. So take an example of university system, that how a university works. So consider university as an outer class and department as an inner class. So department exists inside the university, so it makes sense logically to group them all together. So the concept of inner class is a class inside another class. So in that same way, there is a university and department are placed inside the university. Now coming to the conclusion, the summary of the video that we have gone through. So inner class is equal to class inside another class. So as we saw the example in the previous slide of the university, that inner class means all the logical or relatable classes are put together in the same class to avoid the complexity and to make the code more efficient, and to make it more easier to understand. Second is it helps to organize the related code. Instead of making many classes, it is better to put them in one class logically, as we seen in the example. So it makes it more easier to understand and reduces the complexity of the code. So Java supports 4 types of inner classes. So as we seen throughout the video, we have studied about the 4 classes that Java support, that are local inner class, static inner class, nested inner class, and anonymous inner class. So these are the 4 types of inner classes that are supported by the Java. The fourth is useful for encapsulation and cleaner design. Encapsulation means it is binding or hiding of the data. So all the data in our codes, it is very well secured, and it is very well secured and in a cleaner design. So inner class makes it more neatable, because we doesn't have to make many complex classes. Instead of making many separate classes, we are putting them in the same class, which makes it more cleaner and easier to understand. Guys, this was from our side. So guys, hope you understand everything. Thank you so much for watching. See you again. Till then, bye.